लौट के बुद्धू बागा आए, तो चलिए चलते हैं बागा के ही शैक पर। Also get a tattoo done in Goa. This is one of the better places at the Baga beach inside the British restaurant. अगर आप आ रहे हैं तो कहीं भी टैटू मत कराइए। मुझको बहुत इच्छा थी, but I guess it's a little too late right now. I haven't even thought of a design, but next time I come to Goa, I'm definitely getting another tattoo. ये भी करना पड़ता है जब ऑयल खत्म हो जाए। And that's how it's done in Goa. Last dinner, last place, last meal in Goa, and tomato noodles कोई जगह मैंने कभी try नहीं की है. So let's see what looks interesting. क्या अच्छा है आपके गुलाब जामुन भी और कुछ अच्छा मेरे स्टार्टर में क्या क्या है आपका? हमारे रिंग्स रहेगा, चीज बॉल, राइस, hummus रहेगा, पीता ब्रेड. हाँ तो एक मेजर प्लेटर कर दें. वेज. Let's hope the food is good. इन्होंने अश्योर कर दिया है. Yes, okay.
मेजे प्लेटर। हामुस है अलग अलग तरीके के, सालसा है, यम्मी, और चीज़ फ्रिटर्स भी हैं। इसमें पूरा A to Z फूड चैलेंज हो सकता है। हाँ, अगर इसको सारे इंग्रेडिएंट्स निकाले जाए तो प्लेटर के। भगवान ने कहा बेटा अगर तुमको शाम को इतना बुरा मसाला डोसा खाना पड़ा तो उसकी ये पूरी भरपाई है। This is more than amazing food that I could have imagined. मेरे को यूजुअली इटालियन या इंडियन ही पसंद है गोवा में। मैंने कभी सोचा नहीं था मेजे प्लेटर इतना स्वादिष्ट होगा। I like this place. This has been 3 days of absolute Goa masti. अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो do subscribe to the channel if you haven't already. And next trip again very soon. Thank you again for watching, guys. See you.